Hello, sweethearts, and a very warm welcome. Today I've come up with a video based on words. Some of you must be thinking, why words? यार पहले से इतने सारे words हैं, words क्यों? But let me tell you that words are super important. Words can inspire. We cannot imagine our lives without words. Words that you write or speak to others can leave a huge impact and it can create a lasting memory. It can be good or bad. It just depends upon the kind of words you use. Words can make or break a relationship, and your choice of words and the way you express yourself can accelerate or kill your career even. So words are actually very, very important. Sweethearts, a robust vocabulary improves all areas of communication, be it listening, speaking, reading and writing. आपको हर जगह एक अच्छी vocabulary की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छी vocabulary जब हमारी होती है ना, तो चाहे फिर वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, it improves our academic and social confidence, and even our competences improve. So it is very, very important to learn new words. Let's learn some new words with the help of prefixes and suffixes. Sweethearts, let's talk about prefixes and suffixes. Why? Because prefixes and suffixes also helps in forming new words. तो पहले बात कर लेते हैं prefix की. Prefix. If you break the word prefix, then it becomes prefix. Fix, I hope you all understand. And pre means पहले. तो पहले जो letters जुड़े शब्द के साथ तो prefix हुआ, और अगर letters end में जुड़े तो वो हुआ suffix. This is just a small trick which will help you to understand that okay, this is prefix and this is suffix. A prefix is a group of letters placed before the root of a word. Root means उसके शुरुआत में. For example, let's take the word unhappy. It consists of the prefix un, un, which means not. If it is combined with the root or stem word happy, the word becomes unhappy. Then unhappy is a new word which means not happy. अच्छा, एक चीज़ और है. मुझे लगता है शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि अल्फ़ाबेट और लेटर क्या होते हैं. तो स्वीटहार्ट्स, अल्फ़ाबेट जो है ना वो कलेक्शन है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स. और लेटर यहाँ पे चिट्ठी वाला नहीं. लेटर मीन्स सिंबल, जो आप ए लिखने, ए साउंड के लिए जो आप निशान बनाते हैं, या बी जो आप बनाते हैं, सी बनाते हैं, वो उनको लेटर्स बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं कि एन अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ए टू जेड. तो अल्फ़ाबेट एक है लेकिन उसमें लेटर्स जो हैं वो 26 हैं. तो इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि जब हम कह रहे हैं कि बाय एडिंग लेटर्स, जैसे यू एन अन, अन क्या हुआ, दो लेटर्स जोड़े हैं और वो मिलके एक प्रीफिक्स बनते हैं, और जब हम उसको किसी वर्ड के साथ, जैसे अभी हमने पीछे किया हैप्पी के साथ जोड़ा, तो क्या बन गया, अनहैप्पी, व्हिच चेंजेस द मीनिंग. स्वीटहार्ट्स, यू एन, अन, and re or re are the most common prefixes in the English language. Re means again or back, such as in the words rethink, redo and repay. Here are a few things which you need to remember when learning prefixes. The first thing is that different prefixes in English can have similar meanings, such as un and prefix in and prefix non, all of which mean not or opposite of. Also, the prefixes mis and ir means wrong, wrongly or incorrectly. There's a list also which I'm sharing of prefixes, which you just go through and you will learn that how
the words using various prefixes create new words. Okay, second thing which you need to remember while learning prefixes is that notice that double letters are possible. For example, when you add the prefix im, to words that begin with the letter am, you get two ams, as in immeasurable. That's also true when you add un to words that begin with letter n, as in unnoticeable. The same is true for many other prefixes also, that it doubles the letter. Third thing which you must keep in mind is that when adding a prefix to a word, the spelling of the base word or the root word never changes. For example, the prefix un did not change the spelling of the word happy, and the prefix re would not change the spelling of the word live in relive. Now be careful about the look alikes. कुछ words होते हैं जो दिखते हैं हमें कि वो prefixes के साथ हैं, लेकिन वो prefixes नहीं होते, जैसे कि un in the word uncle is not a prefix. उसी तरह से re in the words like reach or real, they are not prefixes. Sweethearts, now just look at the prefixes with their meanings and some examples. Prefixes like miss, pre, auto, m, semi, non, super, for, this, re, x, etc. are listed there along with their meanings and some examples. For example, misunderstand, misfire, preschool, pre-tax, automatic, automobile, impolite, impossible, semifinal, nonsense, non-stop, superclass, superstar, forecast, forever, disagree, disappear, disregard, return, remainder, reusable, rethink, irrelevant, irregular, exhale, ex-wife, eccentric are some of the examples of prefixes given here. You can just go and just look into your books and find out more words with prefixes and suffixes, which right now I'm going to discuss what suffixes are. But tell me, कहीं बोर तो नहीं हो गए? Suffixes कुछ समझ नहीं आने वाले हैं अगर बोर हो गए हैं. अगर आप कहें तो थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, कोई गाना वाना ही गुनगुना दो, या मैं ही कोशिश कर लेती हूँ. तो कोई गाना मुझे याद तो आ नहीं रहा. आप तो यंग सारे बच्चे, पता नहीं, नए गाने तो मुझे आते नहीं हैं, बट वन ऑफ माई फेवरेट है एक. अगर आप सुनना चाहे तो सुना देती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, ताकि आपका ध्यान फिर सफिक्सेस की तरफ ज़रूर वापस आए. चलो ठीक है, मैं सुनाई देती हूँ बड़ी हिम्मत करके. कौन सा सुनाऊँ? अच्छा, एक लाइन ही गा देती हूँ. आपको दिल में बसा लूं तो चले जाएगा, ठहरिए दिल में बिठा लूं तो चले जाएगा. और आप सबका मन कर रहा होगा. चलो, आई होप आपका ध्यान थोड़ा सा, मूड जो है वो रिफ्रेश हुआ होगा. अब बात कर लेते हैं हम सफिक्सेस की. कर लें? ओके. Now let's turn to suffixes. A suffix is a letter or group of letters added to the end of a word. Suffixes are commonly used to show the part of speech of a word. For example, adding ion to the verb act gives us the word action, which is a noun word. Similarly, comprehend, if you add
a suffix to it, it becomes comprehension, the noun form of the word. Suffixes also tells us the verb tense of words or whether the words are plural or singular. Some common suffixes हैं जैसे er, s, es, ed, ing, ly, ment, sion. इस तरह से कुछ हमारे पास common suffixes हैं. Now let's talk about some things, important things or points to remember when you are learning about suffixes. The first thing is, some suffixes have more than one meaning. For example, the suffix er may suggest a person who performs an action. For example, teach, teacher. So here the suffix er is telling us about a person. Somebody who teaches is a teacher. But er is also commonly added to the ends of adjectives and adverbs. They compare two things and show that one is more than the other, such as in faster, stronger, taller, right? दूसरी बात जो आपको सफिक्सेस के बारे में ध्यान रखनी है वो ये है कि द स्पेलिंग ऑफ द बेस वर्ड कैन चेंज व्हेन एडिंग अ सफिक्स. दिस इज ट्रू ऑफ मोस्ट बेस वर्ड्स एंडिंग इन द लेटर वाई, जो ज्यादातर वाई से खत्म होते हैं. फॉर इंस्टेंस, व्हेन वी ऐड द सफिक्स NESS to the word crazy to make craziness, we replace the letter Y with an I. This rule is also true of many base words ending in a silent E when the suffix begins with a vowel. For example, in the words write, make, manage, we drop the E. E को हटा देते हैं in writing the words when we add ing to make writing, making and managing. We also often drop मतलब छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं उस वर्ड को, the silent E before the suffix able, 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 such as in usable. Be careful though, because with some words we keep E. English थोड़ी सी ट्रिकी तो है, कहीं पर होता है वो चीज़, कहीं पर नहीं होता है, but with practice it becomes your habit to use the good one. We keep the E such as in, जैसे कि changeable, यहाँ पर हमने E को हटाया नहीं है या I में नहीं बदला, ये changeable में E रहा. उसी तरह से lovable, LOVEABLE. Sweethearts, by adding suffixes we can make adverbs. For example, ly लगाते हैं हम word quick में, जैसा कि हमने पहले भी किया है एक वीडियो में, तो वो बन जाता है quickly. उसी तरह से sideways, nouns भी हम बनाते हैं. For example, ant suffix को लगा के assistant, difference, teacher, waitress, spoonful, painting, इस तरह के कुछ examples आप देख सकते हैं. We can also make adjectives by adding suffixes. For example, ish, a little, ish, ish, when हम use करते हैं word के साथ. For example, greenish, blackish. उसी तरह से less, careless. ये कुछ ऐसे suffixes के examples हैं जो word formation में एक नया word create करने में help करते हैं. So in this video, we have learned that how by adding prefixes and suffixes, we can create some new words. And these new words will help us to increase our vocabulary. Increased vocabulary will definitely help us to write good English, be it letter writing, paragraphs, or passages, or answers, or making questions, or whatever you think of writing portion in English. Even speaking, if you will have words, you will feel more comfortable in speaking. Means language overall depends upon the words, which helps you to
come out with your ideas, come out with what you think. It will help your imagination to come onto the paper, or you can make others listen to your imagination. So be full of words. अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज करें, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, आपकी स्कूल बुक्स हैं उसमें भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग वर्कआउट करें, डीडी न्यूज़ सुने, उसमें से वर्ड्स पिक करें, चेक करें, लिखें, उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करें और अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज करें. और हाँ, आजकल सिर्फ वोकेबुलरी इंक्रीज करने से बात नहीं बनेगी. कीप इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी ऑल्सो. बी सेफ and take a good care of yourself. Bye.